First of all, I welcome you all to the workshop Mastering Git and GitHub. And we are thrilled to see so many faces in the virtual room. Around 60 70 people have joined, and I request all of you to ask your friends to join as soon as possible. Before we dive into the exciting world of version control and collaborative coding, let me introduce you to the person who will be guiding us through this enlightening journey of coding, Ayush Kumar. Ayush Kumar is a developer advocate, a Google Summer of Code Alum 22, and AWS community builder, GitHub campus expert, and having keen interest in open source and DevOps. He's a passionate advocate for the tech community. I personally, I have been following his work, impressive contributions to the open source community, and outstanding work as a developer advocate. And his expertise is perfect for navigating the Git and GitHub journey. Uh, and we all are privileged to have him as our guide today. Hi, Ayush. Yep. Hello, everyone. Yeah, Yep. आवाज आ रही है मेरी? yes, you are audible. So, but Actually, I'm also waiting in the meeting. मेरे को इन कर लो. Actually, मैंने एक तरफ से माइक से ज्वाइन करा है for okay. better audio and look. Okay. I just admitted. So, why mastering Git and GitHub? You all are from first and second year, right? And you might be wondering why Git and GitHub. So, let me tell you guys, in the coding universe, uh, okay. So in the coding universe, these tools like Git, GitHub, GitLab, these tools are like magic. They empower developers to collaborate seamlessly and track changes with precision and contribute to open source projects. And whether you are an intermediate coder or you are just starting your coding journey, understanding Git and GitHub is essential. And in this workshop, we will explore the mystery of version control, collaborative coding, and understand the endless possibilities that Git and GitHub offer. And you will not only gain a strong gist of basics, but also learn best practices, tips, tricks that will supercharge your coding journey. And also remember, this workshop isn't just about theory, it's more than that. It will be an hands on workshop, so make sure you join with your laptop. And we will be diving into the practical exercises. So be prepared with your laptop and get coding along with our guide Ayush Kumar. So, without further ado, I present to you Ayush Kumar, and we who will be guiding on this topic, Git and GitHub. So, let's give a virtual round of applause to our speaker, guide, and mentor, and get ready to elevate your coding skills. So, Ayush, the stage is yours. Okay, so like I don't know your name. Yeah, sorry, Prachi, Prachi. Prachi. Yep, Yeah. yep. So hello everyone. So first of all, thank you, Prachi, for introducing me. And hello everyone, my name is Ayush, and currently I'm like graduate from ABS Indian College, Ghaziabad. And yep, so talking about myself, so like I'm GitHub campus expert, currently working as a developer advocate at techlatest.net, one of the Estonia-based company, and also it is a startup. So apart from this, I'm community guy, like doing a lot of amazing community work for the community, open source community, and I'm AWS community builder, also Google Summer of Code student developer in 2022, and author ambassador also. That's all about me. So yep. So like that sums up me, and so like I'm like present my screen also. So मेरे को एक बार कंफर्म करना कि स्क्रीन दिख रही है यार. Yes. Um, yeah. I'm so So, sorry. Just a second. uh,
Yeah, you can start now, Ayush. Okay. All of you can see the screen, right? Now it is visible. Yeah. So, okay, so is that again? Today, so, so let's talk about the like why learning version control is important. Different types of version control system like Git, GitLab, AWS, code commit, etc. Okay, and also we are talking about sorry, starting off with Git and GitHub, like how as a beginner, like how you install Git and GitHub principally, and also like how to set up the GitHub. And we will also go through the GitHub interface, like what is exactly repository code space. Code space is the new feature of GitHub, and also talking about how to import repository and also then we will talking about start off with Git commands. Basically, we are talking about Git init, Git add, commit, and origin. And we will also talking about branch. That is a very important part of it. And then after that, we will talk about how to clone a repository and set up it on locally on your device or on your local machine. Okay. And then we will take some 5 minutes break, and then we'll talk about introduction of open source programs, like and what are the challenges that you have faced. Basically, I'm also part of Hacktoberfest, G-Shock, and these all stuff. Even I'm also part of MLH community. Okay, so like my experience is very good in these all things. So I'm also telling about my experience and how you take part and crack these all programs. And then we'll talking about importance of Git for open source. And like I'm also telling about my own experience around of these programs. And like I'm also telling about like how to make a good profile in tech, or like I get so many invitations from many conferences, events and meetups for any speaker session just like today. So yep. So we are also talking about more on Git. Like we'll talking about pull, push, poke, like what are these commands, and we'll walking through the Git merge and fetch command also. And then after we will do some short summary on everything I will talk to you, and like how to activate a GitHub Pro account. It's everything. So we're also talking about this thing, and apart from this, I'm also telling you about like how to make public profile better, how to make a profile on LinkedIn and these all stuff. Okay, so yep, let's start the session. So first, we'll be talking about why learning version control is important and different types of version control systems like Git, GitLab, and AWS Code. Okay, so from starting, we'll start with basically Git and so basically version control system is a kind of software that helps the developer teams to efficiently communicate and manage track all the changes that have been made to the source code along with information like who made and what changes have been made. Okay, so if we are talking about in simple language, so basically version control is a system. Basically, like for example, एक बार हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा. One person, there are two-person who made their own startup or who made their own projects. Okay, so basically मतलब वो अपने प्रोजेक्ट या स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, so they have some code उन्होंने गिटहब पे पुश कर दिया या ठीक है वर्जन कंट्रोल के थ्रू. सो एक पर्सन यूएसए में बैठा है एंड अदर वन इन इंडिया, ठीक है. सो लाइक वो कैसे पता करेंगे कि किसने क्या चेंजेस करे हैं. सो फॉर दैट रीजन वी हैव यूज किट, दैट इज वर्जन कंट्रोल टूल, or we have to use some version control tools also. Okay, there are many tools in the market, so you have to choose according to your preference. ठीक है, मतलब सारे ही अच्छे होते हैं. We are talking about AWS, वो भी काफी अच्छे. We are talking about Git, GitLab, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे tools हैं. But I prefer Git. ठीक है, so you can also use Git. मतलब वो काफी अच्छा tool है. Basically, so that is the version control. So basically, you can manage, track all the changes that have been made to the source code along with information like who made changes exactly, like किसने वो चेंजेस करे हैं, ठीक है, एंड किसने चेंजेस करे हैं. तुम ट्रैक कर सकते हो चेंजेस को, कम्युनिकेट कर सकते हो like basically what are the changes. These all stuff you can do with the version control tool. Okay, and it is also very important. Okay.
So it is also very important in the developer teams, as in software developer, as in a full stack developer, or as an student. Version control is very important in terms of like in your tech journey or in your software development journey or in your full stack development journey. Okay. So now we're talking about Git. Okay. So we'll also talking about some like AWS and GitLab part. Okay. So nothing is different, but some have some like थोड़ा किसी के पैसे ज्यादा हैं and कुछ free है basically open source है ठीक है. So if you are talking about Git, so it is like totally free and it is open source. Okay, so that's why we can use Git also, and Git is also a very famous and like tool in terms of version control. Okay, so that's why we can use Git. So if we're talking about Git, so basically Git is a version control system used for tracking changes in computer files. It is generally used for source code management in software development, and Git is used to track changes in the source code. The distributed version control tools is used for source code management. Okay. So if you're talking about Git, so basically मैंने जो तुम्हें पहले बताया basically what is Git, what is version control. तो मैंने तुमको Git को ही लेके version control समझाया था basically, ठीक है. So basically हम Git से क्या करते हैं, you can track the changes in your computer files, exactly what are the changes you have made, okay, in other repositories, in also in your own repositories, okay. It is also generally used for basically source code management in software development. Okay, if you manage any source code, if you have any source code or project in development, or if you have any if you have your own project also, so you can manage the source code through Git. Okay. Then Git is also used to track changes in the source code. ये चीज बता दी थी. And then the distribution like same चीज source code management के लिए use होता है ठीक है. And then after it is designed to manage changes done to project efficiently and easily. It is open source, जो कि मैंने बताया था, free to all software, कोई charge नहीं होता इसका. It is open source totally. Okay. Even you can also contribute in Git repositories, Git projects. Okay. And now next we are talking about basically it is a version control system that helps in maintaining small or large projects. So basically like a version control system है, हम इसे मेंटेन करते हैं, लाइक ये हमें हेल्प करता है मेंटेनिंग स्मॉल और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है. Now we will talk in summary. So basically, it is used for tracking code changes, tracking who made changes, coding collaboration, features of this. Okay, so basically, collaboration is very important part in open source. If you are open source contributor or like if you are a community person, so like you can collaborate with other peoples also. You can network with other peoples also. Okay, so collaboration is the very important part. Like you can communicate with other people before you start your open source journey. You can join communities, various communities of open source community. Like for example, if you choose any organization, then you can join the organization community channel. Okay, so then you can start your open source journey. So it is the important part of open source, that is collaboration. Okay. Now let's talk about next thing. So basically, we are talking about installation and setting up Git. Okay. So for Git, you Google one simple Git bash. Type on Google. Okay. So you can see here the download option. So you have to click on this, and after that you have go through like you can choose operating system according to your preference. Like here you can see Mac OS, Windows, Linux, Unix. Okay, so you have choose according to your own operating system. I am on Windows, so I have click on Windows. Okay, and then after you have to click according to your preference. Also you can download the portable thumb drive edition, that is 64-bit Git for Windows Portable. Okay, so you have to click on this. Okay. यार किसी का माइक खुला है. Okay. So basically, like you have to click on 64-bit Git for Windows Portable. Okay. And then after clicking on this, I have already downloaded in my computer. So that's why I can download. You have to click on this. After clicking on this, yeah, like the जो exe की files होंगी वो तुम्हारे computer पे आ जाएंगी.
एंड देन तुम्हें उसको सेटअप करना है सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप करके, ठीक है. आई विल प्रोवाइड यू वन वीडियो ऑल्सो फॉर दिस, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड डाउनलोड इट. ओके. मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दैट्स आई कांट डाउनलोड, ठीक है. And then what we have to do after setting up Git. So basically, we have walked through what is repository, what is code space, and how to import a repository. Okay. So basically, we are talking about repository. So repository is can be used to store development project. It contains many more things like folders, license, and readme files. And a GitHub repository can also be used to store ideas or any resource that you want to share. Okay. So basically we are talking about repository. एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, तुम्हारा कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है या तुम्हारा कुछ भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड दैट इज ऑन द लाइक योर लैपटॉप, ठीक है, एंड तुम्हारा लैपटॉप डैमेज हो गया, बेसिकली लाइक उसमें सारा डाटा चला गया. सो व्हाट यू डू, मतलब फिर तो तुम्हें फिर से सारी चीजें करनी पड़ेंगी. सो द बेस्ट थिंग इज कि तुम उसको गिटहब पर पुश कर दो इन द फॉर्म ऑफ रेपोजिटरी, ठीक है, वो सेफली पड़ा रहेगा और तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. That is the benefit of GitHub and repository. Okay, so basically, repository can be used to develop, store a development project, and it contains many more things like folder. अभी जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, license file and readme files. ठीक है, and a GitHub repository can be store ideas or any resources that you want to share. So basically, you can also say repository is a container in which code files are stored on a version control app belongs to a project or app. Basically, it's a cloud sharing and saving of code for an app to share publicly or manage code efficiently. Okay. And the repository manages various branches, codes, and helps in maintaining the CI/CD for the project. ये थोड़ी like ऊपर की चीज है and high level की. So I'm not telling. बता दूंगा CI/CD basically क्या होता है. So we will go on repositories part. Okay. So this is the GitHub. If you don't have account on GitHub, so simply you can type on Google github.com, and then you can make an account with your Gmail or email. Okay. And then after you can see this type of interface, and you can give name according to your preference, like what, like जो भी तुम्हें पसंद हो. Then what we will do one thing. Now we will go on repositories part. You can see here the repository part. Okay. And after this, we have created a new repository. So we will click on new button. And then you can see here the repository name. Like थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, ठीक है. And repository का name तुम्हें डालना है. तो basically today's session is from तुम्हारे GDSC का नाम क्या है, एक बार नाम बताना. GDSC. VPPCOE. Okay, my GDSC data. Okay. And then your new, so you can see the message, your new repository will be created at GDSC BP. Okay. And then after you have to give some description, like what is the description? This is the, anything we will give according to your preference. Okay. So this is the session on Git and GitHub. Okay. So after that, you can see the option of public and private also. If you want to private your like तुम्हें अगर private करनी है अपनी repository, so you can do it private. And if you want to do it public, so तुम उसे public भी कर सकते हो, ठीक है. So you can see both buttons here, options here. So I can like make my repository public. So I can click on the public button. You can also create on the private if you want to do so. Okay. So click on the public repository, public option. Then after this, you can see here the README. Basically, initialize the repository with README. And in the agenda of uh, today's agenda, we will see what is repository, how to create it, and README is the very important part of any project or any repository. Okay, so basically, README is the thing where you can where you can write your project docs or stuff. Basically, what exactly is the project, कैसे installation करना है, like how, like कौन contributors है project में, क्या license है, these all things you can like see in README. Okay, so basically you can click on this, add a README file. Okay, options पे click करना है. Then after you will to choose license. So like what are the license? So you have to click on according to your preference. Like license तुम्हें खुद choose करना है. Like I could choose Apache license. Okay, according to your preference. And then you can click on create repository button.
and you will see that the your new repository is created. That you can see the about section. This is the session on Git and GitHub. We will give some description, and you can see in the README part. This is the session on Git and GitHub. You can see the license README. Okay, README option. So like in this way, how you कैसे तुम basically repository को create कर सकते हो, ठीक है? This is the like way. And the next thing is like we are talking about repository कि basically repository कैसे create करना है, then you can give name, ठीक है? Then you can choose license. So yep, so in this way you can create repository. And the next thing is like what is code space. So we're talking about code space. Okay, so you can see the option of code space here. थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, ठीक है? You can see the option of code base here. Okay, so you don't have any code base with this repository checked out. Checked out. Okay, so simply you have to create on create code space on master. So this will take some time. So I will tell you something about code space up to that time. Okay, so yep, it is setting up. तो बेसिकली कोड स्पेस क्या होता है फॉर एग्जांपल लाइक तुम यहाँ से इस प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप पे या तुम अपने लोकल कंप्यूटर पे ले जाना चाहते हो, ठीक है? बेसिकली दिस इज द रेपोजिटरी और दिस इज द प्रोजेक्ट, ठीक है? अपने लोकल कंप्यूटर पे तुम्हें ले जाना है इस प्रोजेक्ट को. सो लाइक तुमने क्या करना होगा, पूरा गिट के थ्रू करना होगा, लाइक तुम्हें डाउनलोड करना होगा या तुम इसको इसके थ्रू भी कर सकते हो. बेसिकली लोकल में जिप फाइल्स को भी डाउनलोड करके उससे भी कर सकते हो, ठीक है? एंड देन उसे तुम सेटअप करोगे. लाइक ये तो सिंपल एक प्रोजेक्ट है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क ऑन सम रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो तुम्हें उसका पूरा सेटअप लाइब्रेरी सब कुछ डाउनलोड करनी होगी, ठीक है? एंड कोड स्पेस इज द वेरी कूलेस्ट फीचर फ्रॉम गिटहब. लाइक यू कैन यू डू नथिंग फॉर लाइक एनी प्रोजेक्ट. लाइक तुम्हें कुछ भी अपने आप से सेटअप वगैरह नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी इंस्टॉलेशन तुम्हें खुद से नहीं करना है. बेसिकली यू हैव टू क्लिक ऑन कोड स्पेस बटन और वो खुद से सारी चीजें तुम्हें करके देगा, ठीक है? Like if you have some additional installation things like some libraries or anything, ठीक है? तो वो तुम्हें खुद से ही सारी चीजें करके देगा. दिस इज लाइक द थिंग दैट कोड स्पेस डू. और कोड स्पेस क्या होता है बेसिकली? So basically it is like a type of online ID. तुम बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, आईडी नहीं बोलेंगे बेसिकली, ठीक है? ये तुमको पूरा सेटअप करके देगा बेसिकली कि लाइक तुम्हें एडिशनल कुछ भी नहीं करना है अपनी तरफ. सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन इन कोड बेस बटन एंड सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप से, ठीक है? लाइक यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू थोड़े से मतलब ज्यादा इंस्टॉलेशन जिसमें होते हैं, लाइक गो वगैरह के प्रोजेक्ट पे तुम वर्क करो, ठीक है? तो लाइक ये सब खुद ही करके देगा बेसिकली. सो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली कोड स्पेस, जो हम कोड स्पेस की बात करते हैं, और काफी अच्छा है. यू कैन ट्राई इट ऑल्सो. ओके, सो हाँ, ठीक है. So basically, we were talking about introduction of mine. Then we will talking about version control. We will talking about some tools also. Then we will start with some Git and GitHub, and we will talk about installation and setting up. And after that, we will talking about repository, how to create it, what is code space. These all stuff we are talking about. Now we are talking about starting off with Git commands basically. Okay, demonstrate uploading the code is okay, and basic Git commands basically what is Git init, add, commit, origin, remote, Git branch. Okay, okay. So yeah, like we will do with some मतलब हम कुछ कमांड्स को चला के भी देखेंगे बेसिकली, ठीक है? देन कि बेसिकली क्लोन कैसे करना है, फोक कैसे करना है, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लाइक आस्क मी. अभी मतलब अभी तक किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि ये काफी लंबा जाने वाला है. सर एक बार शॉर्ट में समझा दो ना, ये रेस्पिरेटरी क्या था, मतलब वो रेस्पिरेटरी. अच्छा, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी. हाँ सर, हाँ रेस्पिरेटरी. तो ओके, एक सेकेंड. सर मतलब इसका यूज क्या है, मतलब रेस्पिरेटरी का. रेपोजिटरी का हाँ श्योर बता रहा है. ठीक है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर. सो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि
अपना माइक ऑफ करो पहले, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि बेसिकली इफ यू वांट टू सेव सम कोड और समथिंग स्टफ, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव योर ओन कंप्यूटर, ठीक है, तुम्हारे पास में तुम्हारा खुद का लैपटॉप है दैट इज डैमेज और उसमें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं खुद के, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो तुम क्या करोगे बेसिकली, वो प्रोजेक्ट तुम्हारा लैपटॉप डैमेज हुआ तो वो प्रोजेक्ट भी जाएंगे ना उसके साथ में, ठीक है, तो फिर तुम्हें फिर से सब चीजें करनी पड़ेंगी। एंड इफ यू हैव अकाउंट ऑन गिटहब एंड यू विल पुश दैट कोड इन द फॉर्म ऑफ रेपोजिटरीज, ठीक है, मतलब तुमने वो कोड को रेपोजिटरी के फॉर्म में पुश करा या जो भी करा, ठीक है, तुमने अपने को वहां पे कोड्स या प्रोजेक्ट अपलोड कर दिए, तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर और कभी भी, ठीक है, इवन तुम मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो उसको। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रेपोजिटरी, एंड हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम उसके लिए रेपोजिटरी यूज करते हैं, प्लस हम वी विल ऑल्सो कोलोबरेट। फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने किसी दोस्त को रेपोजिटरी कोड भेजना है तो तुम उसको डायरेक्ट यार लाइक जिप फाइल वगैरह थोड़ी ना भेजोगे क्योंकि दैट इज वेरी लेंथी, ठीक है, तुम डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर दो, यू सो दे कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। So basically that is called repository. Basically it is a folder that contains lot of files like license file, readme file, and these all things, ठीक है। readme में basically you can see lot of stuff regarding project, कि like what सर is the वॉइस project, how to ब्रेक हो रही install। है। हेलो, अब आ रही है ठीक? हेलो, हेलो। अब आ रही है ठीक है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है बीच। यार तुम्हारी हाँ तरफ सर। से इंटरनेट Yes, इशू होगा, मेरी you तरफ can से। continue. Yep. Yeah, you're audible. You can continue. Okay. सो बेसिकली रेपोजिटरी इज दैट पार्ट, ठीक है, मतलब तुम जहाँ पे रीडमी फाइल्स देखोगे यू कैन सी रीडमी फाइल्स, लाइसेंस फाइल, ठीक है। सो इन रीडमी फाइल्स यू कैन सी लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग प्रोजेक्ट लाइक व्हाट इज द प्रोजेक्ट, हाउ टू इंस्टॉल द प्रोजेक्ट, and in license file you can see lot of things like regarding you can't copyright any project, so that's why you can use license, okay। so this is the repository, I think अब मतलब तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। यस सर, यस सर। मतलब सर जो गिट्स एंड गिट्स हब है उसमें हमारा कोड सेव होना चाहिए ना पहले से, तो ये हम लोग एक्सेस कर पाएंगे ना। हाँ मतलब तुम उसको पुश कर दोगे पहले से ही तो तुम उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, बेसिकली एक बार पुश करो एंड देन यू कैन एक्सेस एनी एनी टाइम और फ्रॉम एनीवेयर, ओके। ओके सर। Okay, so like above we are talking about basically what is git commit, and okay, so yep. So before we start working with Git, we have seen some major points here. So what is commit in Git? In simple language, Git commit command is one of the core primary function of Git. Prior use of the git add command is required to select the changes that will stage for the next commit. Okay, basically it is used git commit command is used for like basically used for the next stage. Like if you want to commit some code in your repositories in or in other projects, so you can use git commit command. Okay, and then a git commit is used to create a snapshot of the state changes along a timeline of a git repository project history. So basically, working with Git, like this is how the overview of how Git works. All the detailed concepts of Git are mentioned below. So basically, I'm sharing these talks with all of you. Okay, you can go through it also. This is like the docs that I can make in my GCE training, basically GitHub Campus Expert training. Okay, and like it is a like a very detailed doc regarding Git and GitHub. You can also use it. Okay, for your like मतलब तुम्हें भी अगर सीखना है तो you can use it for your reference. And then we will talking about README file. So basically, I can tell you in the starting that README file is an essential guide. Okay, it is a guide that gives you other developers a detailed description of your GitHub project. A good README helps your project to stand out from other projects also. README is also the very important part of a project in GitHub. Okay, it is the first thing to notice while encountering your project. So it would be pretty brief but detailed. बेसिकली आजकल तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग गिटहब पे रीडमी बना के अपनी रखते हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ लाइक पोर्टफोलियो नहीं मतलब बेसिकली इट इज स्टाइल्ड द रेज्यूमे, ठीक है, दैट इज वर्क्स एज इन योर रेज्यूमे, मतलब वो रेज्यूमे की तरीके तुम्हारा वर्क कर रही है, ठीक है। like you can see my readme, like you can see a lot of stuff regarding me, like about me, like and then you can like see my languages that I am working on.
C++, Python, JavaScript. You can see my blogs, projects, my experience, and honors and awards. These all things you can add in README. So README is also the very important part of GitHub. Okay, and your profile of GitHub. So like it is working as portfolio or resume for you. ठीक है मतलब आजकल बहुत सी companies they are only seeing your README and your contribution for on GitHub and they directly hire you. So it is like very important nowadays in the market. So I am suggesting to all of you, make your README proper and good. ठीक है मतलब हम उस पर भी एक सेशन बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट अपना तुम रीडमी को प्रॉपर क्रिएट कर सकते हो यू कैन ऑल्सो वॉच सम वीडियोज ऑन यूट्यूब ठीक है काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं हाउ टू क्रिएट अ गुड रीडमी एंड दीज ऑल स्टफ यू कैन गो थ्रू इट एंड वॉच द वीडियोस ओके सो yep now we're talking about some git init and git add and git commit, git origin, git branch. So basically we have we will see code space, we will see a lot of things. Okay, we will see readme part, like how to create code space, these all things we will see. Now we will work on git version control tool. Okay, and like we can install the project and we can do something stuff. Okay. So basically we will do मतलब हम दो तरीके से you can contribute on projects. तुम दूसरे के projects में भी contribute कर सकते हो and you can also contribute in your own project through version control. ठीक है and version control is the uh, मतलब जो वर्जन कंट्रोल है दैट इज द कॉर्पोरेट सिस्टम तुम कंट्रीब्यूट तो ऐसे भी कर सकते हो यू कैन you can click on this button add file button and you can see the upload files create new files this is the dump method ठीक है इससे कभी मत करना that is वो बेकार तरीका है and you can use corporate type मतलब उस टाइप की यूज करो जो बेसिकली डेवलपर्स यूज करते हैं ठीक है बिकॉज एट द एंड तुम्हें बाद में गुड एक अच्छा डेवलपर बनना है. So basically, we will install this repository. So you can see the local command, HTTPS address of this. You can click on code button, then you can see the HTTPS address. So you can click on the copy this code, HTTPS code. Then I will tell you in the starting about the Git bash that you have to download through some YouTube videos and all the things. I will also provide some YouTube videos for Git bash. Okay. So you have simple you can simple type git bash here. यार एक सेकंड रुकना है कुछ लिख कर दे रहा हूँ मैं डेस्कटॉप में फोल्डर बनाता हूँ बेसिकली तो न्यू फोल्डर ओपन गिट बैश शेयर कर ठीक है सो बेसिकली मैंने गिट बैश ओपन करा है अपने डेस्कटॉप के अंदर नाउ वी विल रन सम कमांड्स बेसिकली ठीक है तो बेसिकली दिस इज योर ओन प्रोजेक्ट तो हमको इसको फोक नहीं करना है ठीक है दिस इज योर ओन प्रोजेक्ट मतलब तुम्हारा मेरा खुद का प्रोजेक्ट है ठीक है अगर हम किसी और का प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर पर लाना वी हैव टू इंस्टॉल सम अदर प्रोजेक्ट ऑन आवर ओन कंप्यूटर ठीक है तो you have to do one thing that is fork the repository then you have to clone it यहाँ पे हम simply basically पहले ही clone करेंगे ठीक है first step is git clone and you have to paste copy that http address okay and you have to paste here git clone and paste here so basically you have to click enter after this okay so you have to तुमने मैसेज देखा होगा cloning into GDSC VP ठीक है and receiving objects this type of message you have to see so that GDSC VP के नाम से हमारा प्रोजेक्ट था then you can see here GDSC VP के नाम से you can see the license and readme files okay so ऐसे करके you can contribute मतलब you can install clone the project in your own computer. Now we will also do some other projects. मतलब हम कुछ और भी projects clone कर लेते हैं basically दूसरों के जो projects हैं ठीक है give me a minute I will take some projects so we'll take some fork and fork okay so this is my I will also tell you about fork and forge the fork and forge this is my own committee that is started by me basically we have do some cool stuff regarding DevRel and community management regarding open source basically we are providing some guidance we will do some hackathons also okay
and meetup series. We will start some meetup series, and I am GC, so the meetup series directly sponsored and supported by GitHub also. Okay, so you can also join our community. I will provide the link. Give me one. We will also provide some hiring opportunities. Okay, so basically, yeah, I will send you the link in the uh, chat box. Okay, so starting. Yep. So this is the GitHub organization of my own. This is the GitHub organization of my own community. So it's from Neelange because I am also the admin of this community. So basically, we will not take to the contribution area. We will take some Alexa is one of the okay. So we will take this project that is Hacktoberfest on 2020 2022 wrappers. Okay, so you have to copy it. You have to, no, you have to first fork this repository. Okay, so basically, what is fork? So fork is the thing that can create a copy of other project on on your GitHub. Okay, in simple words, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो fork एक ऐसी चीज है basically you have to like फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करा ठीक है एंड वो कंट्रीब्यूशन गलत हो गया बेसिकली मतलब एंड वो धोखे से एडमिन ने मर्ज भी कर दिए ठीक है तो मतलब तुम डायरेक्ट उसके प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हो गलत कर दिया तुमने ठीक है तो दैट्स व्हाई वी कैन क्रिएट फोक फोक से क्या होता है अगर तुम प्रोजेक्ट को फोक करते हो किसी और के प्रोजेक्ट को ठीक है तो वो एक कॉपी क्रिएट कर देता है तुम्हारे गिटहब के अकाउंट पे बेसिकली तो यू हैव नॉट चेंजेस डायरेक्टली ऑन अदर प्रोजेक्ट मतलब तुम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते किसी और के प्रोजेक्ट पर ठीक है दैट्स व्हाई वी कैन लाइक डू फोक एट थिंग इन on GitHub. Okay, so you can see here the Oktoberfest 2020 reports from. Give me a minute. Okay. So basically you can see the IU 7614 Hacktoberfest 2022 repos. ठीक है मतलब मैंने एलेक्सा द टेक कम्युनिटी से Hacktoberfest की रेपो को कॉपी वो फोक करा है बेसिकली ठीक है तो यू कैन सी हियर फ्रॉम इन योर प्रोजेक्ट सेक्शन सॉरी रेपोजिटरी सेक्शन ठीक है यप यार कहाँ गया वो फोक करा था Yeah, that I think I'm the admin of that organization, so that's why वो मतलब मेरे को इसलिए नहीं दिख रहा था I think. एक सेकंड रुको मुझे यार किसी और का प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा तो तो लाइक ये एक प्रियांशी है ठीक है मैं इसका ही प्रोजेक्ट एक ले लेता हूँ कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डीएसए का ये इसका ही वाला प्रोजेक्ट ले लिया ठीक है सो नाउ यू हैव टू क्रिएट अ फोक ऑन दिस प्रोजेक्ट so it can create a copy on your own GitHub account. Okay. Yep. So you can see here messages. The DSA 100-day challenge from Priyanshi. Okay. Now you have to like clone this repository. Same way हम उसे clone करेंगे. ठीक है. So you have to run a command git clone and you have to paste HTTPS address. Then you have to enter. Click on enter button. Okay. Yep. So it is like done. मतलब तुम डेस्कटॉप में अपने जाओगे तो यू कैन सी द डीएसए 100-day चैलेंज ठीक है नाउ यू हैव टू ओपन विद सम विजुअल स्टूडियो कोड और समथिंग ठीक है मतलब तुम्हें कोई कोड एडिटर से इसको प्रोजेक्ट को करना है ओपन सो यप यप सो सो नाउ यू हैव टू ऐड समथिंग ठीक है मतलब हम कुछ भी ऐड कर देते हैं बेसिकली ठीक है तो मैंने day1.md करके जो हमारा फाइल पड़ा है उसको खोला एंड यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया देन यू कैन सी कंपेरिजन सीरीज ऑन डीएस से ठीक है मतलब मैंने कुछ भी ऐसे फॉर एग्जांपल ऐड कर दिया दिस इज ओनली फॉर द डेमो पर्पस
तुम जब प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, एक मैंने डेमो दिखाया है तुम्हें बेसिकली हाउ वर्जन कंट्रोल और गिटहब पे कैसे कमिट करते हैं, पुश करते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं दूसरे के प्रोजेक्ट में, एंड बेसिकली इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई हैव टू लाइक मतलब मैंने वैसे तुम्हें करके दिखाया बेसिकली। तो यू हैव टू सेव दिस, तुमने सेव कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब तुमने क्या करना है, तुमने उस प्रोजेक्ट के अंदर आना है बेसिकली। यू कैन सी द 100 days चैलेंज एंड यू राइट क्लिक करके यू कैन ओपन द गिट बैश हियर। ठीक है, तो तुम यहाँ पे गिट बैच में देखोगे डीएसए 100 days चैलेंज एंड द ब्रांच इज मेन ब्रांच। ठीक है, तुम मेन डिफॉल्ट ब्रांच पे हो, दैट इज द मेन ब्रांच ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो डिफॉल्ट ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। देयर आर मेनली टू मतलब ब्रांचेस इनफाइनाइट हो सकती हैं, कितने भी तुम ब्रांचेस बना सकते हो बेसिकली मेन मास्टर। ठीक है, इवन यू कैन लाइक तुम अपने नेम की ब्रांच बना सकते हो बेसिकली जिस पे भी तुम्हें वर्क करना है। ठीक है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांच, फॉर एग्जांपल ठीक है मैंने प्रियांशी के प्रोजेक्ट पे कुछ चेंजेस करे, दैट इज रॉन्ग, मतलब वो गलत हो गए। ठीक है, एंड मैंने वो अपने नाम से भेजे तो उसके लिए फ्लेक्सिबल होगा कि वो डायरेक्ट मर्ज नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे नाम पे ब्रांच से गया है। ठीक है, लाइक चेंजेस, एंड अगर वो सही होंगे तो वो मर्ज कर देगी, तो वो डायरेक्टली जो मेन ब्रांच होगी दैट इज द डिफॉल्ट ब्रांच। ठीक है, या जो भी डिफॉल्ट ब्रांच होगी वो उसमें मर्ज हो जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांच। ठीक है, सो यार अभी हम मेन पे ही वर्क कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ब्रांच वाली चीज यू कैन मतलब तुम मुझसे देख लेना। बहुत कोई दो कमांड तुम्हें रन करने हैं बेसिकली, जो भी तुम्हें ब्रांच का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल चलो मैं बता ही देता हूँ, बेसिकली गेट गेट ब्रांच एंड बेसिकली मैंने अपने नाम से ब्रांच बना ली आयुष, एंड git you have to run then git checkout। ठीक है, तो यू कैन सी लाइक तुमने एक चीज देखी होगी गेट ब्रांच आयुष, आई एम रन द कमांड। ठीक है, बेसिकली तुम्हें जिस नाम की ब्रांच चाहिए तो तुम्हें एक कमांड रन करनी है गेट ब्रांच आयुष, एंड देन नेक्स्ट तुम्हें कमांड रन करनी है गेट चेकआउट आयुष। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखा होगा तुम्हारी ब्रांच स्विच हो चुकी है, यू आर ऑन द आयुष नेम ब्रांच। ठीक है, तो नाउ मतलब तुम देख सकते हो कि बेसिकली ब्रांच हम कैसे बनाते हैं। अब देन अगर तुम्हें आयुष पे चीजें ऐड करनी है, लाइक तुम्हें डायरेक्टली डिफॉल्ट ब्रांच पे चेंजेस नहीं करने हैं, तो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन आयुष नेम की जो ब्रांच हमने बनाई है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, तो नाउ यू कैन रन गिट ऐड कमांड। ठीक है, जो तुमने चेंजेस करे हैं बेसिकली दीज आर द चेंजेस यू कैन सी, मतलब हमने जो ये चीज लिखी है कंपेरिजन सीरीज और डीएसए। ठीक है, तो गिट ऐड एंड डॉट। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन इंटर। ठीक है, ये ऐड हो चुका है, देन गिट commit minus m and now you can give some message according to your preference। ठीक है, git add command is that command, basically it is add the code, मतलब जो भी तुमने changes करे हैं वो add कर देता है। ठीक है, git commit minus m and then 8 add code। okay, and you have to click on enter again, then you can see the message आयुष पे एक changes हो चुका है, one file changes, one insertion, one deletion, one git commit। ठीक है, and now you have to push on आयुष branch, मतलब यहाँ पे देख लो जो जिस branch को you have to push on that code। ठीक है, उस पे ही तुम्हें कोड पुश करना है, git push origin and आयुष। It will take some time। देखो दिस इज द मैसेज, न्यू ब्रांच जो कि हमने क्रिएट करी थी आयुष के नाम से। ठीक है, आयुष पे आयुष से गई है, जो कि डिफॉल्ट ब्रांच हमारी नहीं है, जो हमने खुद क्रिएट करी है प्रियांशी के प्रोजेक्ट में। ठीक है, अपने गिटहब पर। So you can see here the message Ayush had recent push less than a minute ago। ठीक है, यहाँ से तुम कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली पुल रिक्वेस्ट इज द थिंग, तुमने फॉर एग्जांपल कोई चेंजेस करे देन तुम्हें दूसरे के प्रोजेक्ट में जो चेंजेस भेजने हैं बेसिकली सेंड करने हैं, सो दैट हम उसके लिए पुल रिक्वेस्ट करते हैं, बेसिकली कोड फॉर्म भेजते हैं थ्रू पुल रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड द पुल रिक्वेस्ट। ओके, नाउ यार अब तुम देख सकते हो कि हाउ यू सेड रिसेंट पुश लेस देन अ मिनट अगो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट एंड यू कैन सी हियर द आयुष, लाइक जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आयुष से मेन ब्रांच पे जा रहा है। ठीक है, बेसिकली तो मतलब अब देख सकते हो कि बेसिकली कैसे चीजें वर्क करती हैं, हाउ हाउ रिमोट थिंग्स वर्क बेसिकली।
तो यू कैन सी द ओपन अ पुल रिक्वेस्ट मैसेज, यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो। ऐड कोड मैंने लिख दिया है, मैंने यहाँ पे प्रियांशु को मैसेज दे दिया कि दिस इज फॉर डेमो पर्पस only for session. Okay, you have to give a short message according to your preference. तो तुम यहाँ पे मैसेज दे सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट and you can see you can successfully make your first pull request in open source. Okay, this is called the how open source actually works, how git and version control works, how fork push, these all stuff. Basically जो मेन चीजें होती हैं you have to see, यही चीजें होती हैं basically open source में. ठीक है, तो you can see मतलब प्रियांशी के प्रोजेक्ट में you can see the pull request एक आ चुकी है basically your pull request that is made by me at code. Okay, and you can see the changes here. मतलब तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे तुमने देखा होगा मेन ब्रांच, मैंने जो मेन ब्रांच पे कमिट करी है आयुष वाले से. ठीक है, अब अगर प्रियांशु को जो अच्छा लगेगा तो वो अपने डिफॉल्ट ब्रांच उसकी जो मेन ब्रांच थी उस पर वो मर्ज कर देगी. दैट इज कॉल्ड मर्ज. और अगर वो मर्ज करेगी, ठीक है, तो दैट मतलब हो जाएगा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब तुमने किसी और के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया. Basically, this is called how open source actually works. How what is open source? मतलब सारे आंसर तुम्हारे यही है बेसिकली कि ओपन सोर्स एक्चुअली में ओपन सोर्स क्या होता है. बेसिकली हाउ एक्चुअली ओपन सोर्स वर्क्स. ठीक है, बेसिकली हमने गिट इनिट देखा, ऐड देखा, कमिट देखा, ओरिजिन देखा, ब्रांच देखा, क्लोन देख लिया कैसे करना है. ठीक है, फोक पुल पुश वी विल ऑल्सो मतलब हम कर देख चुके हैं. पुल रिक्वेस्ट देखा, मैच मर्ज और ये सारी चीजें हमने देखी. ठीक है, and the next question is the introduction on open source programs like challenges. Okay, so अब हम थोड़ी सी जो हमें वर्कशॉप वाली चीजें थी वो हमने मतलब डन करनी है अपने साइड से. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी नाउ. और उसके बाद में फिर हम थोड़े से प्रोग्राम्स की बात करें. नो सर. यार तुम लोग थोड़ा बोर बोर से हो रहे हो क्या? मतलब देखो मेरे को एक चीज तो मालूम है. ठीक है, मैंने भी बहुत सारे सेशन अटेंड करे हैं. ठीक है, और मैंने भी मतलब बहुत सारे सेशन दिए हैं. आई थिंक मेरा ये 52 या 53rd सेशन होगा. ठीक है, मतलब गिटहब पे नहीं, मैं टोटल बता रहा हूँ. मैं कल भी एक सेशन लेने वाला हूँ डेवऑप्स के ऊपर. बेसिकली मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ. ठीक है, ब्लू लर्न कम्युनिटी पे अगर यू वांट टू लर्न सब डेवऑप्स स्टफ तो तुम कल वाली ज्वाइन कर सकते हो. मैं उसका भी लिंक तुम्हें दे देता हूँ. ठीक है, एक सेकेंड देखना. स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? मतलब ऑनलाइन इवेंट्स में थोड़ा रहता है सीन. ठीक है, मतलब देख लो ये है बेसिकली ऑलरेडी 141 रजिस्ट्रेशन हो चुका है. ठीक है, कल है डेवऑप्स की मास्टर क्लास ब्लू लर्न कम्युनिटी में. ठीक है, अगर यू वांट टू ज्वाइन तो तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो. डेवऑप्स 101 बिगिनर गाइड टू डेवऑप्स इस पे करना. वो वाला शायद इनका कुछ ग्लिच है वो इसलिए दिखा रहा है. तो बेसिकली यू हैव टू रजिस्टर ऑन ब्लू लर्न ऐप. ठीक है, मैं तो उसकी लिंक भी दे दे रहा हूँ. अगर यू वांट टू लर्न सम DevOps stuff तो यू विद मी तो तुम मुझसे कर सकते हो. बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट सम DevOps tools. Basically what is DevOps, how you start your journey as a DevOps engineer, or we will also talking about some cloud stuff. Basically I'm from last 8 months, 8 or 7 or 8 months I'm working on AWS, GCP and Azure. I'm also AWS community builder. Okay, so we'll all talking about these all stuff tomorrow in Blue Dun event. Okay, so ठीक है इसे हटा देते हैं अभी. Let's talk about next thing, that is what. Okay, so introduction on open source programs and challenges like Hacktoberfest, GSOC. Okay, so we'll talking about LFX mentorship also जो कि यहाँ पे mention नहीं है. We will also talk about some outreach internships that is beneficial for girls also. मतलब गर्ल्स के लिए काफी beneficial होता है outreach. ठीक है, so we'll talk about some open source programs. Basically, LFX is a program. ठीक है, that helps मतलब हर साल होता है. आई थिंक 3 4 8 होते हैं उसके. तीन मतलब साल में 3 बार होता है, 3 3 महीने के उसमें. ठीक है, सो यू कैन अप्लाई इन डेट. काफी अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं सीएनसीएफ के प्रोजेक्ट. बेसिकली लिनक्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स काफी सारे होते हैं, प्लस ऑल्सो प्रोजेक्ट्स ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ठीक है, तो काफी अच्छा पेड रिक्वेस्ट भी होता है उसका. मतलब सॉरी काफी पेड रिक्वेस्ट कह रहा है, काफी अच्छा पे आउट भी होता है. ठीक है उसका. एंड यू कैन ऑल्सो कोलोबरेट विद ग्लोबल कम्युनिटी.
तो तुम ग्लोबल कम्युनिटी के साथ भी कोलोब्रेशन करते हो. ऑल्सो यू विल मीट सम मेंटर्स एंड ऑल दैट यू विल you also build your own connection. ठीक है, so that is the benefit of मतलब LFX mentorship. There are a lot of challenges you have to face in LFX mentorship. मतलब काफी सारी applications होती हैं. You have to stand out from different. अगर अच्छे से different बनना है, ठीक है, you have to contribute from starting. मतलब तुम्हें starting में contribution करना पड़ेगा. You can see on LFX mentorship website. ठीक है, मतलब तुम उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट्स हर साल आते ही आते हैं, तुम कोई प्रोजेक्ट अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग पकड़ लो एंड यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टार्टिंग. ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से कंट्रीब्यूट कर दो, 1-2 महीने पहले स्टार्ट कर दो. सो मतलब जो लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है बेसिकली यही होती है कि मतलब स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करा, पर उन्हें पार्ट लेना चीजें आती हैं, पर क्यों नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करा होता. ठीक है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू अगर तुम स्टार्टिंग से कंट्रीब्यूट करते हो उसमें. Now we're talking about Google Summer Code, that is the best program in open source. ठीक है, the stipend is around, मतलब जो मेरी थी वो 2,34,000 आई थी अगर हिंदी में बताऊं तो. ठीक है, that is around $3,000. ठीक है. So basically, Google Summer Code is also a very good program in open source. The challenges that everyone face कि proposal accept नहीं होता. तो same thing Google Summer Code में भी बताऊंगे. Basically, you have to contribute in sorry, you have to contribute in starting. ठीक है, मतलब starting में तुम्हें contribute करना है. And the next thing कि in open source the community bonding is very important. ठीक है, कम्युनिटी जो नेटवर्किंग है, तुम्हारी जो कम्युनिटी वाली चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ना कि तुम्हें डायरेक्ट जंप करना है कंट्रीब्यूशन के ऊपर. फर्स्ट यू हैव टू मेक कनेक्शंस. फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाइक गूगल समर कोड में जाओ तुम. ठीक है, बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तुमने ऑर्गेनाइजेशन अपने टेक स्टैक के हिसाब से चूज कर ली. अकॉर्डिंग टू योर टेक स्टैक यू हैव टू चूज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समवन इज गुड इन रिएक्ट जेएस. ठीक है, रिएक्ट जेएस की तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज करी, नोड जेएस की कुछ भी चूज कर ली. एंड देन यू कैन मतलब तुमने उसका लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कुछ पब्लिक चैनल्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लैक और डिस्कॉर्ड. ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन दैट चैनल, देन यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ठीक है, तुम्हें वहां पे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, लाइक आई एम दिस लाइक माई नेम इज दिस एंड आई हैव डू लॉट ऑफ स्टेप इन टेक. मतलब मैंने ये कर रखा है. यू हैव डू, अगर तुमने कोई इंटर्नशिप्स करी है, तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाए, यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट योर सेल्फ. मतलब तुम्हें ये बता देना है सारी चीजें 1 मिनट अपना. ठीक है, तो यू विल हेलो लाइक मतलब तुम्हें ऐसे. यप. हेलो हेलो. हाँ जी, बोलो. सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी बीच बीच में, बहुत. यार मुझे लग रहा है वो तुम्हारी तरफ से नेटवर्क कनेक्शन है, क्योंकि मेरे को तो मतलब Yeah, आई please डोंट नो. check your network connection, Parikshit, because he is audible. यप. Yeah. यप. ओके मतलब ओके. मेरे को और किसी से क्वेरी नहीं है. आई थिंक तुम्हारी तरफ से नेटवर्क कनेक्शन है. मेरा तो वाईफाई चल रहा है भाई तगड़ा. बिकॉज आई एम रिमोट इंजीनियर तो मेरा ऑल्सो. भी मतलब मेरे 10. को वाईफाई. हाँ सर, कोई मेरा नहीं भी यार. 10 Mbps आ रहा है मतलब. हाँ वो होता है दिक्कत. कोई नहीं यार, बता देना मेरे को, डीएम कर देना, मैं बता दूंगा अगर तुम्हें कोई क्वेरी. ठीक है. So basically, the networking part is very important. You can introduce yourself in public channels. ठीक है, there are a lot of public channels in organization. तुम्हें वहाँ अपने आप को introduce करना है. Plus you have to make connection with open source contributors, communities. You can make connection with your mentors. ठीक है, जो admins होते हैं basically जो project को handle कर रहे होते हैं, basically जो messages डालते हैं. ठीक है, तो तुम्हें वहां से अपनी कम्युनिटी बॉन्डिंग करनी है. देन यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग. अगर तुम उनसे बोलोगे कि सर आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट, आई एम बिगिनर इन दिस प्रोजेक्ट, तो वो तुम्हें गाइडेंस देंगे, प्लस तुम्हें बता देंगे कि कैसे बेसिकली कंट्रीब्यूट करना है. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब एनी ओपन सोर्स प्रोग्राम. ठीक है, मतलब तुम ऐसे ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट जंप नहीं करना है. ठीक है, so we will talk about GSOC और मतलब Hacktoberfest is the very good program for starting. मतलब beginners के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है, अभी होने वाला भी है. ठीक है, we will like in our in fork and forth we will do some good stuff on Hacktoberfest. हम काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं. ठीक है, we will also do some meetups. If you इन लाइक तुम अगर दिल्ली में और लाइक मैंने मतलब आई एम प्लानिंग 7 सिटी मीटअप्स टाइप सीरीज. मतलब हम 7 सिटी मीटअप्स टाइप की सीरीज कुछ प्लान कर रहे हैं. ठीक है, अगर उन 7 सिटीज में तुम आते हो तो यू कैन कम एंड ज्वाइन अवर मीटअप. ठीक है, हम वहाँ पे लॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट सम ग्रेट स्टफ.
in meetups. Also, we will give some swags, and we will provide some food also regarding pizzas and all the things. ठीक है, basically it is a type of meetup. ठीक है, so मतलब तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो. बेसिकली यू कैन मीट मी ऑल्सो, ग्रैब सम गिटहब स्टिकर्स. यार अगर आज का इवेंट it is online, if I come in your college, तो basically I will give you some stickers and swags. ठीक है, मतलब वो कभी और करेंगे हम. ठीक है, तो ऑनलाइन की वजह से हम अभी वो कर नहीं सकते हैं बेसिकली. ठीक है, so yep, these are all things we will do for Hacktoberfest. You can join our community, you will know all the things. मतलब कर सकते हो तुम, ज्वाइन करो. Then we will talk about MLH fellowship. That is also the very good program in open source. ठीक है, there are a lot of, मतलब उनकी काफी सारे ट्रैक होते हैं. Not only open source, there are software engineering tech. ML is the global community of hackers. Basically, they promote hackathons, they promote community work, they promote some the open source stuff. ठीक है, so you can join the MLA Discord server also. ठीक है, तो and like there are a lot of programs that MLH fellowships are there. एक महीने लाइक 20 days वाली भी होती है, 3 महीने वाली होती है. 20 days वाली जो होती है वो उसमें पे नहीं करते हैं. बेसिकली यू हैव टू बिल्ड कनेक्शन, यू हैव लर्न सम प्रोग्रामिंग थिंग्स. These all things you have will do in MLH fellowship, जो 20 days वाली होती है. And then if you are talking about 3 month वाली, then that the payout is very good. एक्सेक्टली मेरे को अभी याद नहीं है, बट यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट. ठीक है, काफी अच्छा होता है मतलब उसका पे आउट. प्लस फैक्स इज ऑल्सो वेरी गुड इन एमएलएस फेलोशिप. ठीक है, सो यू कैन डू एमएलएस फेलोशिप, दीज ऑल स्टफ. Then we are talking about GitHub Campus Expert Program. So that is the very मतलब if you are a community guy, that is मतलब वो तुम्हारी कोडिंग वगैरह नहीं देख रहे हैं, तुम्हारा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, यू आर अ गुड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, मतलब इतना भी जरूरी नहीं है. दैट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट इन GitHub Campus Expert Program. So if you are talking about like GitHub Campus Expert Program, so they see your community work, like तुमने कितने hackathons में पार्ट लिया है, how many hackathons you are mentoring. ठीक है, कितने हैकाथॉन में मेंटरिंग करी है, लाइक हाउ मेनी कम्युनिटी वर्क यू आर डूइंग, लाइक कहाँ कहाँ तुमने गाइडेंस ली है, वेयर यू आर लाइक पब्लिक स्पीकर, दी ऑल स्टफ दे आर सीकिंग. ओके, मतलब उस टाइप की कैंडिडेट्स देखते हैं बेसिकली. सो यप, वी मतलब ये हो गया ओपन सोर्स प्रोग्राम्स. आई ऑल्सो टेलिंग अबाउट द चैलेंजेस. एंड सो वी विल टॉकिंग अबाउट, यार अप्रोच मैंने बताई, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कैसे करना है वो भी बता दे. बेसिकली यू हैव टू ज्वाइन द कम्युनिटी चैनल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन वहां से तुम्हें चीजें पता चलेंगी. ठीक है, एंड देन आपके उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ गिट फॉर ओपन सोर्स एंड डिस्कस होने के. ठीक है, ओके. सो यार मेरा जी शॉप का जो एक्सपीरियंस था काफी अच्छा था. बेसिकली इट इज वेरी गुड. ठीक है, मतलब काफी अच्छा था. पता नहीं मेरा कैसे हो गया, आई डोंट नो. ठीक है, मतलब मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई करा, आई डोंट नो मेरा कैसे हुआ है. ठीक है, सो एक्सपीरियंस इज गुड, मतलब काफी अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिला. लाइक आई गेट इनविटेशन फ्रॉम many places, मतलब काफी कॉलेजेस से, काफी जगह से, बेसिकली फॉर स्पीकर सेशंस, फॉर जजिंग द हैकाथॉन्स, मेंटरिंग द हैकाथॉन्स. इवन मेरे अभी भी स्लॉट्स बुक रहते हैं बेसिकली. ठीक है, मतलब हर मंथ के बेसिकली यहाँ जाना वहाँ जाना. ठीक है, एज एन डेवलपर एडवोकेट आई एम वर्किंग रिमोटली. ठीक है, कि हाउ टू, मतलब एक ये भी चीज लोगों को करनी होती है कि हाउ टू फाइंड द रिमोट जॉब्स बेसिकली. ठीक है, एंड ऑल्सो रिमोट जॉब्स पे मोर देन फैंग. मैंने ये भी मतलब तुम्हें बताता हूँ, अर्न 4x देन फैंग इन रिमोट जॉब बेसिकली. ठीक है, मतलब काफी अच्छा पे आउट है. एंड यप, सो these all stuff I am doing. So yep, that's all for today. Hmm, yep. क्या प्रॉब्लम आ गई यार इसको? यार एक चीज करना, तुम कम्युनिटी ज्वाइन करके कम्युनिटी पे डालो. ठीक है, मतलब जो भी जिसको डाउट आ रहा है वो कम्युनिटी पे डाल दो. देन वी विल सॉल्व टुगेदर. ठीक है, मतलब हम वहां से सॉल्व करेंगे. सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मतलब मैंने सारी चीजें कवर कर ली आई थिंक. अगर किसी को अब कुछ डाउट हो तो नाउ यू कैन मतलब आस्क, अब पूछ सकते हो. So this is my socials. Okay. Basically, I will put the link in the chat box, so you can connect me on Twitter and LinkedIn also. Okay. So this is the, and GitHub also. So, so this is my socials. You can connect me on Twitter, LinkedIn, and GitHub. Okay. Also, you can go through my blogs. I am writing some like
I'm writing some amazing blogs on CNCF projects, open source projects, DevRel, and community management. Okay, so you can also go through my Hashnode blogs and like you can enjoy that stuff. Okay, so this is the project. This is the Hashnode links. So we will do this stuff. Yep. So, okay. So we will talking about code space close for me. Now, anything left, Prachi? Yeah, thanks Ayush for joining us today. And as we bring our Mastering Git and GitHub workshop to the end, I want to express heartfelt gratitude to each and every one of you who joined and our great speaker guide Ayush Kumar. So thank you for joining today, Ayush, and thank you for sharing your knowledge about open source, developer advocate, and communities with us. यार and one thing is कि एक चीज करना you Hmm. have to put one thing मतलब अपने पेज से भी करना and तुम लोग जितने भी हो you can tag me on Twitter or LinkedIn and post like write some good words for me मतलब मेरे लिए नहीं यार मतलब वर्कशॉप के लिए या सेशन के लिए कुछ लिख देना कि इवेंट अच्छा था कुछ इस टाइप का ठीक है मुझे नहीं तुम्हारे वो चाहिए रिव्यूज वगैरह Yes. कोई दिक्कत नहीं है ठीक है Yes. so you मतलब ये कर देना बस it's a small request plus also I will put one link here give me a minute okay if you want one on one guidance with me मतलब मेरे से अगर वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए यू कैन बुक अ फ्री कॉल अगर तुम्हें पेड कॉल भी करनी है तो यू कैन बुक अ पेड कॉल और फ्री कॉल विद मी ऑन टॉपमेट ठीक है आई हैव वेरी गुड रेटिंग ऑन टॉपमेट आल्सो ठीक है सो मतलब तुम मेरे साथ वन ऑन वन कॉल भी बुक कर सकते हो यू कैन टू लाइक टेक गाइडेंस ऑन ओपन सोर्स स्टफ डेवलप कम्युनिटी मैनेजमेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स एंड ओके सो यप Yeah. So let's share the best moments and lessons you have taken away from the workshop on socials, like Ayush said. So tag GDSC and Ayush on Twitter, LinkedIn, Instagram, and yeah, let's catch up there. Okay, thank you for Thanks, having me, Ayush. Prachi, Thanks for and joining in here. it was a nice interacting with the Thank you. community. And yep, thank you guys, thank you everyone for Time joining. to give Bye back to the bye. community. Yep. Thanks Bye for sir, joining. thank you. Okay, thank you, bye. Community join कर लेना सब लोग ठीक है Yeah, I'll share that important links on my community, GDSC group. ये लिंक्स कॉपी कर लेना ठीक है Yeah, yeah. मतलब मेरे को बता देना मैं तुमसे बाद में भी उस पर भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप या Okay. नहीं Okay, okay.